अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इनसाइड एज। आज की वीडियो में हम मेनली साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के फर्स्ट टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट न्यूज़ स्प्रिंकल्ड हियर एंड देयर। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। द फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका डरबन में खेला जाना था और टॉस हुई एंड साउथ अफ्रीका गो आउट टू बैट एंड from the very first ball, the Sri Lankan Pacers found some sort of a rhythm. Or pitch we it was behaving more towards the bowler. It was giving more support to the bowlers. The Fernandos, Lahiru Kumara, all of them were wreaking havoc. और कंसिस्टेंटली विकेट्स गिरती रहीं. टोनी रिजोर्जी आउट हुआ, बवूमा, मल्डर, मार्क्रम, स्टब्स, all of them. No one or none of them, I should say, got too prolonged of a stay at the crease. Wickets were consistently falling, and ये भी नहीं था कि there was like only one bowler who was taking the wicket के like जिस तरह लहिरू कुमारा सारी विकेटें ले रहा है या प्रभात जयसूर्या. लेकिन प्रभात जयसूर्या तो wasn't really effective in this test match क्योंकि the pitch was more favoring to the fast bowlers. So the wickets were all split between the two Fernandos and Lahiru Kumara. Anyways, nothing really stuck for South Africa, and they were all bundled out for 191. And at this point in time, I vividly remember thinking, okay, Sri Lanka has really improved a lot in the last 6 months from a team जो बिल्कुल एक लिहाज से hopeless लग रही थी, a terrible World Cup, just a lot of their old players getting old and आइडेंटिटी टीम की नहीं कोई पता चल रही थी. कैप्टनसी कैरोसेल चल रहा था कि कभी कुसाल मेंडेस कैप्टन बन जाता था, कभी मैथ्यूज थे, कभी वो दिमुथ करुणारत्ने. एंड देन with the arrival of Sanjay Surya, who was, I should remind you, brought in as a like interim coach. He wasn't even the full-time coach, the interim coach, along with Sanjay Surya becoming the head coach and Dhananjaya De Silva becoming the test captain. Sri Lanka's team completely changed shape. So, I went on a tangent there. Anyways, back to the match. So, Sri Lanka was in a spot where I believed that they had South Africa, quote unquote, on the ropes, na? And I was at that point thinking that Sri Lanka might actually win in South Africa again, but I foreshadowing. I was completely wrong. Anyways, Sri Lanka की first inning आई, and from the very first ball, Gerald Kudzea and Marco Jansen put Sri Lanka on the back foot. Pathum Nisanka jaldi out hua. Dimit Karunaratne, his whole stay at the crease was completely uncomfortable. He edged one to first slip. Then Pathum Nisanka edged the ball to the slip cordon, and just like that, wickets just kept falling and falling and falling. Eventually, Sri Lanka was 32 for 4, and they fell down to 32 for 8. Eventually, getting bundled out, all out for 42, which is, I'm pretty sure, the second lowest score in World Test Championship history. The only score behind them is India जब 36 पे ऑल आउट हुआ था एडलेड ओवल में. तो उसके अलावा दिस आई एम प्रीटी श्योर दिस इज द सेकंड लोएस्ट स्कोर. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो Marco Jansen took 7 wickets. Gerald Kudzea took 2 or 3. I am not sure, but Marco Jansen took 7 for 13. Just an absolute dominant spell from the very first ball. उसको pitch conditions का अच्छा अंदाजा था और he made use of those good conditions. बैटिंग की बात क्या करें, खड़ा कोई हुआ नहीं. आई थिंक कमिंडू मेंडेस वाज द हाईएस्ट स्कोरर विद लाइक 13. even in the lowest moments of Sri Lanka, Kamindu Mendes somehow comes to the top. खैर 42 पे ऑल आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका वाले फिर बैटिंग करने आए और इवन दो कुछ फिर अर्ली विकेट्स गिरी,
They were not enough to deter South Africa, who were at the end of the day, if I'm not wrong, 88 or 87 for two or for three. uh, इधर एक चीज मेंशन करना ये जरूरी है कि फील्डिंग करते वक्त वायन मुल्डर ब्रोक हिज फिंगर एंड उसको यानी ये था कि ही डिडंट उसको बस या हमें पता ही नहीं था कि विल ही बैट विल, क्योंकि फील्डिंग और बॉलिंग से तो उसको मना कर दिया था डॉक्टर्स ने कि यू आर नॉट गोइंग टू फील्ड एंड यू आर नॉट गोइंग टू बॉल। लेकिन वायन मल्टर ब्रेवली केम आउट टू बैट एट वन डाउन और उसने अपने वो 15 रन किए, विच आर 15 मोर देन आई वुड हैव डन इफ आई वाज इन दैट सिचुएशन, क्योंकि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। लेकिन हिज प्राइड एंड his duty to his nation took over and he played. Anyways, हम उसके बाद अगले दिन पे आए तो मार्करम जल्दी आउट हुआ, आई एम प्रीटी श्योर इन टू द डे 108 पे आई थिंक थर्ड विकेट गिरी थी इनकी। एंड वहां से ट्रिस्टन स्टब्स एंड टेम्बा बवूमा जस्ट completely took the game away from श्रीलंका। 108 पे जब तीन थे तो तब फिर भी कुछ श्रीलंकन कैंप में ये आई बिलीव के होगी कि हम इधर कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि पिच वॉज गेटिंग अ बिट मोर फ्लैट और इट वॉज प्रोवाइडिंग अ लिटिल बिट मोर टू द बैट्समैन। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स एंड टेम्बा बवूमा completely took the game away from them. Both scored centuries, and eventually at the end of the innings, South Africa ने 366 किए at a loss of 5 wickets. They declared and sent Sri Lanka out to bat. Now the second time Sri Lanka came out to bat, एज आई सेड पिच भी थोड़ी बैटिंग को हम थोड़ी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू हो गई थी, तो बैटिंग वाज स्लाइटली मोर इजियर। लेकिन दैट डज नॉट मीन के द श्रीलंकन बैटर्स हैड इट इजी। द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स मेड देयर लाइफ हेल आउट देयर कंप्लीटली, like brilliant bowling all around by the South African bowlers, especially by Marco Jansen and Gerald Coetzee. Wickets were still like consistently falling, but there were intervals उनके दरमियान थोड़े ज्यादा बढ़ गए थे। Dhananjaya De Silva made a 50, Kusal Mendes made 80 odd runs, Dinesh Chandimal played well. And funnily, ये ESPN Cricket Info पे है जो वो commentary कर रहा होता है, उस बंदे ने भी ये कहा था कि why ball Jeffers? Just give the Sri Lankan batsman the worst ball you can and they will get outed. क्योंकि like Dinesh Chandimal and Kusal Mendes, I'm pretty sure, both got out on absolute lollipop of deliveries. Like, kabhi bhi a batsman of their caliber should not be getting out on those deliveries. लेकिन खैर किसी तरह श्रीलंका वाले 259 तक गए, but that was the most they could do. The South African bowling was too relentless, and South Africa won the first Test match comprehensively and has taken a 1-0 lead in this series. अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्टेक्स पे आए तो दिस इज अ मैसिव लॉस फॉर श्रीलंका, क्योंकि अब उनकी जो विन परसेंटेज है इट्स बैक डाउन टू 50%, एंड इट्स ऑल्सो अ मैसिव विन फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि आफ्टर ऑस्ट्रेलियाज लॉस in the first test match at Perth in the Border Gavaskar Trophy, South Africa is now second in the World Test Championship, which means that if the situation stands, India and South Africa are going to be the World Test Championship finalists. So South Africa have done very well. Probably couldn't have asked for more to start off the series. Comprehensive victory. लेकिन they will have some troubles going forward. क्योंकि वायन मल्टर की इंजरी का तो मैंने जिक्र किया था। Now Gerald Coetzee is also out due to a groin injury, and he's not only out of this test series. He's out of this test series and the all format series coming up against Pakistan. So that is a massive loss for Australia कहने लगा था for South Africa, क्योंकि जेरल कुटज़ेया is a brilliant bowler. T20 में फिर भी थोड़े रन खा जाता है, लेकिन in ODIs and in Test cricket he is a very good bowler, and the best thing I should say about him is his never say never attitude ना,
क्योंकि इवन आप देखें वर्ल्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अगर 2023 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ही गेव हिज ऑल। जब उसने जॉश इंग्लिश को आउट करा के जो उसने उसको घुरी कराई थी, ओहो। तो Gerald Coetzee, very good bowler. Marco Jansen, he won man of the match. Obviously, he also got a 10 for. So that was a brilliant performance by him. और आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू फेसिंग दीज गाइस मैन, स्पेशली क्योंकि हमारे जितना बुरा साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड है प्लस दिस टीम, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान। खैर, बैक टू द सीरीज आए तो श्रीलंका हैज वर्क टू डू। ऑब्वियसली इतनी बुरी डिफीट के बाद थोड़ा सा मेंटल इफेक्ट भी आता है, लेकिन दे आर अ स्ट्रॉन्ग टीम, एंड स्पेशली विद द गाइडेंस ऑफ सनत जयसूर्या, जिसको एक्सपीरियंस है इन a lot of experience in international cricket, or with the maturity their team possesses, with a lot of players who have played for around 10 more than 10 years. So I think they can bounce back, and I hope they get a game out of South Africa, क्योंकि फिर थोड़ा सा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो बैलेंस है वो फिर रिस्टोर हो जाएगा। खैर, दैट वाज नॉट द ओनली टेस्ट मैच जो अभी इस पिछले वीक में हुआ। सो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आल्सो प्लेड अ टेस्ट मैच इन न्यूजीलैंड, एंड इंग्लैंड वन रादर कंप्रहेंसिवली। अगर थोड़ी सी उसकी समरी दूं तो New Zealand batted first. Kane Williamson, for the first time since 2018, got out in the 90s. They made 319 runs. उसके बाद इंग्लैंड आया, और आफ्टर अर्ली विकेट्स ओली पोप और हैरी ब्रुक ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, आई थिंक फॉर मी द मेन हाईलाइट ऑफ दिस इनिंग was this catch that Glenn Phillips took. Ollie Pope ने इस तरह करके कट मारा, and Glenn Phillips dove like this and took a brilliant catch. One of the best catches I've seen in my life. And that pretty much stole the highlight. That pretty much stole all the spotlight from Harry Brooks' brilliant inning once again. बहुत अच्छा खेला Harry Brook. He made 150 plus again and took England to a commanding 499. और उसके बाद न्यूजीलैंड आया बैटिंग करने, एंड दे pretty much didn't get going. Not many big partnerships. Capitulation is a strong word, लेकिन they kind of capitulated here, giving England a target of about 170 runs, which they rather comfortably chased. Jacob Bethel scored his first ever Test match 50, brilliantly played, or aggressively played as well. लेकिन the true star of the show was Bryden Cars, who got his maiden 10 for. He bowled very well in both innings and completely deserved the man of the match award for his hard work out there. उधर अब इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीत गया, एंड they have dented New Zealand's World Test Championship final hopes once again. They were pretty much dashed after the Sri Lanka series, लेकिन इंडिया वाली सीरीज had restored some hope, लेकिन this test match loss is one which I personally believe New Zealand could not have afforded. खैर, अगर टेस्ट मैचों साइड पे आए तो चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट्स पे आए तो इट्स प्रीटी मच स्टिल अप इन द एयर, लेकिन एक सेंस ऑफ एक रेजोल्यूशन आ रही है, क्योंकि देयर हैज बीन अ रूमर्स being spread around in the past few days कि Pakistan has finally accepted the hybrid module, but on two conditions. First condition कि Pakistan will get extra revenue for the Champions Trophy, and second condition कि whenever इंडिया में अब कोई टूर्नामेंट होगा till 2030, I'm pretty sure Pakistan will also be provided the hybrid model कि हम भी इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, सक्सेस, क्योंकि लेट्स बी रियलिस्टिक हियर, इंडिया वाज नेवर कमिंग टू पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं आना था, ठीक है, और दिस इज द बेस्ट वी कुड हैव गॉटन, क्योंकि you get extra revenue and you get an out whenever you have to visit India next. तो आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल जो मोहसिन नकवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आई नो ही इज अ बिट कंट्रोवर्शियल ड्यू टू सम ऑफ द cricket field concerns,
लेकिन एज अ क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब. उसने सर्जरी का कहा था. आई criticized him in the past for the surgery, लेकिन he's tried. He's gotten us two head coaches. Gary Kirsten left. Jason Gillespie might be leaving, लेकिन he got us those two coaches. He brought in Akib Javed after seeing कि Akib Javed's portfolio and the way he masterminded the test series win against England. uh, उसके अलावा चैंपियंस कप का इनिशिएटिव, अभी चैंपियंस T20 कप भी होने लगा है. ही ब्रॉड प्रेसिडेंट्स कप बैक. कायद आजम ट्रॉफी की उसने थोड़ी सी आई थिंक प्राइस पूल भी बढ़ाया है. और जो उसने स्टेडियम्स रेनोवेशन कराए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. तो एज अ पीसीबी चेयरमैन फॉर मी, इग्नोरिंग ऑल हिज ऑफ द फील्ड कंसर्न्स, ही इज डूइंग वेल. तो आई थिंक दिस इज अ विन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया वाज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान एंड वी गेट द एक्स्ट्रा रेवेन्यू व्हिच वी डेस्परेटली नीड, एंड वी गेट सम लेवरेज नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर देयर इज अ टूर्नामेंट इन इंडिया. तो आई सी दिस एज अ विन. खैर, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा स्टटर कर रहा था एंड आई वाज फॉरगेटिंग स्टफ, क्योंकि आई हैव बीन अ लिटिल बिट अंडर द वेदर टुडे. तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी. आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे सोशल्स का लिंक दिया हुआ है, आप उधर जाके मुझे फॉलो कर लें. कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दें, एनी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, ऑल इज़ अप्रिशिएटेड. और बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है. और मेरी तरफ से, आपके होस्ट की तरफ से, आप सबको अल्लाह हाफ़िज़.